country in the world can thrive, can prosper, if the business community is not protected, is not facilitated. So this is the bottom line from where I would like to build my argument. And for any reason, if the business climate in a country is not conducive, people are coerced, they are harassed, there's no way that the business will grow in that country or in that society. So once I took over, assumed chairmanship of this institution, National Accountability Bureau, 2 years back, one of the biggest challenges was, the dwindling confidence level of business community. I was fortunate enough to move around in the country, interacted with various trade bodies, business communities, and chambers. And one thing common was this, the thing that we lacked perhaps was not in terms of intellect, not in terms of capital, it was conducive environment, business-friendly environment. That was my take. And then we started working out a plan to rebuild this bygone or, the lost confidence, step by step, one step at a time. We started with Karachi Chamber. I think you were also there. We had our first interaction there. I was given a set of certain issues, and I'm very glad to share it with you that of the 15 top issues, I was able to resolve 13 out of them. Mines and metals, huge potential. We started moving in the right direction. We need to maintain the the momentum. And very soon, there will be no dearth of investors planning of queuing up for Pakistan, and you see, change taking place. Agriculture. We were done well, not this year, of course. There was a sudden, decline in the production. But this enormity of potential, you could be an agriculture powerhouse. Even today, you just named the best crops, the cash crops and the food grain crops. Rice, cotton, maize, sugar cane. Very much confident that inshallah it will become a political body. It has become to a very large extent. और अगर थोड़ा बहुत रह गया कोई हैंगओवर इफेक्ट है वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा. I hope I have answered the question. नहीं, no more. No more questions, no more questions, no more. अच्छा अच्छा दो ले लें हाँ अच्छा एक ऐसे आज एक मिनट चले बोलने सर नेशनल इशू है रोजनामा ने आया थे इस्लामाबाद में मैडम रवीना जो थी उसको इंचार्ज है उसके बाद 2000 करोड़ रुपया था 2014 में ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है जब डेथ हुई मजीद निजामी साहब की वहाँ पे हजारों वर्कर है वो पैसा यहाँ का नजर नहीं आ रहा ना तनख्वाहें मिल रही हैं ना वहाँ फर्नीचर है ना वहाँ एसी चलते हैं उसमें गर्मियों में ना सर्दियों में गीजर चलते हैं तो मैंने दरख्वास्त दी है पहुंच गया आपका क्वेश्चन पहुंच गया लगा हुआ है काइंडली उस पे आप अमल कर इंशाल्लाह 2002 तमाम मीडिया के हज़रात से गुजारिश है कि चौथे फ्लोर पे तशरीफ ले जाएं. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया आपके आने का. मैं नहीं अभी नहीं. अच्छा मेरी है कि आप हजरात के साथ दोबारा एक नशिस्त करेंगे इंशाल्लाह. वहाँ आपके तमाम खदशात जो सवालात में पूछेंगे. अब हम कोई स्पेसिफिक जो है ना बिजनेस रिलेटेड जो स्पेसिफिक डिटेल्स उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करनी है जो कि हम चाहेंगे कि मीडिया की नॉलेज में ना आए. कराची से अच्छा हाँ मैं ले रहा हूँ जी हाँ आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि 4th फ्लोर पे चले जाएं. मीडिया वाले तमाम दोस्त 4th फ्लोर पे चले जाएं. जी बहुत ले लें. मैं उनको हेलो कर दूँ. मैं चेन्नई वाला मैं आपको देता हूँ.